Well, it's great to be back on pitch side, just discussing this win, the first win of Pakistan against South Africa. Of course, it wasn't without its hiccups. That's always something which we all sort of talk about as well, that you've got to finish games better. But that's something that I'd like to ask my guests here. And I've got a very, very special guest here with me, Naseem Shah, alongside Ramiz Raja. We'll talk all about that later, but let's talk about Naseem's performance so far. Naseem, पहले तो ये कि 3 विकेट्स की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये बताएं कि ये जो पहला ओडीआई जीतना कितना थोड़ा सा एक रिलीफ मिलता है कि आपने शुरुआत में ही सीरीज़ जो है एक पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट की। बिल्कुल इम्पोर्टेंट होता है सीरीज़ के स्टार्ट में अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस करो तो अपोजिशन ऑब्वियसली थोड़ी सी प्रेशर में आता है अगले मैच के लिए, और अच्छा स्टार्ट इम्पोर्टेंट है। तो अच्छा एक स्टार्ट हुआ और उम्मीद है कि इससे बेहतर क्रिकेट खेले और आगे जो 2 मैचेस है उसमें इससे बेहतर क्रिकेट खेल के सीरीज़ जीते। आप अपनी परफॉर्मेंस पे आ जाते हैं। आपकी 3 विकेट्स नहीं, यू टुक 3 विकेट्स टुडे एंड रिदम के बारे में बताएं थोड़ा सा, कैसा लग रहा है? ऑब्वियसली डिफरेंट फॉर्मेट हमने पहले भी डिस्कस किया था, T20s डिफरेंट होते हैं, ODI क्रिकेट मुख्तलिफ है, तो आप कैसे एडजस्ट करते हैं फिर तीनों फेजेस में बॉलिंग करना, न्यू बॉल के साथ, मिडिल फेज में, डेथ पे, इसको कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे? देखिए बिल्कुल, एक तो बॉर्डर से बाद जब आप मैच खेलते हो तो ऑब्वियसली आपको एज अ प्रोफेशनल एडजस्ट तो करना होता है, और स्टार्ट में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आप एडजस्ट कर लेते हो। और मैं हमेशा जहाँ भी खेलता हूँ तो तीनों फेज़ में बॉलिंग करता हूँ, नए बॉल से भी और मिडल में भी और डेप्थ में, तो मैं इस चीज़ पे कोशिश करता हूँ और हमेशा डे बाय डे कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, इम्प्रूवमेंट की कोशिश करते हैं, और जो भी टीम का हेल्प कर सके तो उसमें 100%। सबसे मुश्किल फेज कौन सा है? यू सेड यू बोल इन ऑल 3 फेजेस विद द न्यू बॉल, या सबसे मतलब चैलेंज किस में आता है? डेथ पे आता है, मिडिल में आता है, या फिर नए बॉल के साथ? देखिए डिपेंड करता है सम टाइम, क्योंकि अगर जिस तरह आज का पिच था तो इस पे नया बॉल कुछ खास हो नहीं रहा था, तो हमारी ये कोशिश थी कि हम नए बॉल पे कम से कम रन दें, क्योंकि बहुत मज़े से बॉल बैट पे आ रहा था। तो इसमें आपके पास बहुत कम चांस होता है कि आप आगे पीछे बॉल कर लो तो आराम से चौका हो जाता है। और फिर डेफ में ऑब्वियस सी बात है, बैट्समैन यही सोचते हैं कि रन्स के लिए जाते हैं, तो आपको उससे आगे जाके सोचना होता है और अपनी बेस्ट डिफेंसिव बॉलिंग करनी होती है। तो आई थिंक ये है कि ओवरऑल आसान तो नहीं होता, लेकिन एज अ बॉलर आपको ये सारी चीज़ें देखनी। एक जो चीज़ रमीज़, I mean of course you can ask questions to him as well, but we need to touch upon closing out the games for Pakistan, because वो एक ऐसा एस्पेक्ट है जहाँ हम देखते हैं कि पाकिस्तान एक लग रहा होता है कि कंफर्टेबल पोजीशन में है, और उसके बाद अक्रॉस फॉर्मेट्स हमने देखा है, चाहे वो टेस्ट मैच हो चाहे ODIs में, थोड़ी सी दिक्कत एंड में नज़र आती है। इसका क्या रीज़न है? उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? व्हाट्स योर सॉर्ट ऑफ आई डोंट नो सॉल्यूशन, और हाउ डू यू लुक एट दिस? मुझे कुछ आइडिया नहीं। ये सवाल इनसे पूछना चाहिए, क्योंकि ये उस डग आउट में होते हैं। हमारे लिए हमेशा हार्ट रेसिंग थ्रिलर एक प्रोवाइड होता है, और ये खासी देर से हो रहा है, मैं समझता हूँ। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो आपने इनके बारे में की नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट इनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो जो लेग बाय लिया और मैच जिताया इन्होंने। बॉलिंग तो की है। नहीं, पूरी बैटिंग भी अब कर, वही तो मैं कह रहा हूँ, अफगानिस्तान के खिलाफ मैचेस जिताए हैं। एक जो फीचर आजकल चल रहा है वो नसीम यही होता है कि डर लगा रहता है कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सिचुएशन जो है ना, अभी ख़राब हुई, अंदर आप क्या समझते हैं कि क्या चीज़ ठीक होने वाली है, कहाँ पे पाकिस्तान टीम गलती करती है? आपकी क्या इसके ऊपर एक ऑनेस्ट टेक है? रमीज़ भाई, ऑनेस्टली ये है, हकीकत है कि हम कुछ अरसे से इस चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं कि मतलब हम बहुत जल्दी विकेट्स जो है ना वो लूज़ करते हैं। जिस तरह एक मैच फिनिश करना होता है, आई थिंक वो चीज़ थोड़ी सी मिसिंग है। अब आई डोंट नो, इस चीज़ पे देख के सोचना चाहिए, और इस चीज़ पे ऑब्वियसली हमने काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि इस चीज़ में हम थोड़ा लेग कर रहे हैं। तो इस चीज़ को ऑब्वियसली देखना चाहिए, क्योंकि एज अ बॉलर अगर आप बैट्समैन को बॉलिंग करते हो तो आपको आइडिया होता है, और हम जब लास्ट में आते हैं तो हमारे लिए मुश्किल होता है। ऑनेस्टली हमें ऑब्वियसली उस तरह की बैटिंग तो नहीं आती, हम इस तरह की सिचुएशन में मोस्टली आते हैं। तो आई थिंक ये एज अ बॉलर मुझे आइडिया नहीं है कि बैट्समैन अंदर जाके क्या सोचते हैं या किस तरह उनकी थिंकिंग होती है, लेकिन इस चीज़ पे हम स्ट्रगल कर रहे हैं, ये हकीकत। बिल्कुल, इसलिए कि अच्छी भली सिचुएशन थी। पहले रिजवान आउट हुए, उससे थोड़ा सा प्रेशर पड़ा, फिर सलमान अली आ गए, गलत टाइम पे आउट हो गए। सो आपके जो एक मैच विनिंग पार्टनरशिप थी वो एक दफ़ा तितर बितर हुई, उसके बाद फिर से प्रेशर क्रिएट हो गया।
मुझे ये बताएं जो जब देर के बाद आप बॉलिंग करते हैं या पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, उसका कितना प्रेशर होता है? क्योंकि देखा कि नो बॉल्स भी होते हैं, एक रस्टी पना आ जाता है बॉलिंग में। आप क्या समझते हैं कि रिदम कई दफ़ा आपको दोबारा से डेवलप करना पड़ता है कम बैक्स में? देखो ऑब्वियसली जैसे मैंने बात की कि समटाइम थोड़ा सा मुश्किल होता है जब आप काफ़ी अरसे बाद आते हो और मैच खेलते हो, तो आपको सारी चीज़ें जल्दी से एडजस्ट करनी होती हैं क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है गलतियाँ करने की। तो ऑब्वियसली बात है, उसका अपना एक प्रेशर होता है, लेकिन कोशिश यही होती है कि जो चीज़ें हैं जिस पे काम करना चाहिए उन सारी चीज़ों पे काम करके ऑब्वियसली आप आते हैं, और जब परफॉर्मेंस होती हैं तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, फिर आपकी सारी चीज़ें अच्छी नज़र आती है। क्योंकि क्रिकेट ऐसी गेम है कि सम टाइम सारी चीज़ें आप कर रहे होते हो, अपनी ट्रेनिंग सारी प्रैक्टिसेस आप कर रहे होते हो, लेकिन आपकी रिज़ल्ट उस तरह नहीं आते। तो एक टाइम फिर ऐसा आता है कि आप खुद हैरान होते हो कि मैं जस्ट बॉल कर रहा हूँ अपने रिदम के साथ और मुझे विकेटें भी मिल रही हैं और सारा चीज़ हो रहा है। तो उस चीज़ में आई थिंक जितनी आप कंसिस्टेंट होते हो, कंसिस्टेंट आप खेलते हो, तो ये चीज़ें साथ आती है। लास्टली जाते जाते ये बता दें कि फिटनेस पे कितना काम हो रहा है ऑन अ पर्सनल लेवल, बिकॉज पाकिस्तान टीम की जब भी बात होती है तो फिटनेस की हमेशा मेंशन होता है। ओवरऑल प्लेयर्स की मैं बात कर रही हूँ, बट खासी आप जो है किस तरह से जो है इम्प्रूव कर रहे हैं या बेहतर कर रहे हैं, बिकॉज फिटनेस इज़ समथिंग विच इज़ ऑलवेज वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब कभी ख़त्म नहीं होती, हमेशा मज़ीद इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। नहीं बिल्कुल, फ़िटनेस पे ज़ाहिर है अभी टाइम मिला था, फ़िटनेस पे काम किया, और अभी जिस तरह के डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, जैसे T20 से हमने चेंज किया, वनडे पे आए हैं, तो आपका वर्कलोड ऊपर नीचे होता है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग जितना मर्ज़ी फ़िट हो जाओ, इंजरी ग्राउंड में ऐसी टाइम पे आ जाती कि उसके आपके फ़िटनेस से ताल्लुक़ ही नहीं होता। मतलब आपको कई पैर मुड़ जाता है या कुछ होता है, तो स्पोर्ट्स में ये होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे ये होता है, जो मुझे लगता है कि यहाँ पे इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है कि हर चीज़ को फिटनेस के साथ जो है ना वो जोड़ लेते हैं। सम टाइम ग्राउंड की इंजरी होती है, आप डाइव मारते हो, आपके कंट्रोल में नहीं होता। दुनिया के फिट प्लेयर्स जो होते हैं वो भी इस तरह के इंजरी के शिकार होते हैं, लेकिन फिटनेस ये है कि आप 10 ओवर कर रहे हो, 15 ओवर कर रहे हो, वो किस तरह कर रहे हो, ग्राउंड में भाग कैसे रहे, वो चीज़ें मुझे लगता है ज़्यादा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला टू शेयर योर थॉट्स, एंड ऑफ कोर्स रियली वेल बोल्ड टुडे, एंड वी विश यू लक कि आप इसी तरह जो है परफॉर्म करते रहें। एंड ऑफ कोर्स अब आप वापस जा सकते हैं और अनवाइंड कर सकते हैं। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक ऑन पिच साइड, एंड व्हेन वी डू कम बैक विल बी हैविंग अ क्लोजर लुक एट दिस मैच, सो डोंट गो एनीवेयर। Well, we're back on pitch side, and Pakistan has won the first game of this three-match ODI series, and all the games will be played in Faisalabad. Great crowd in today. The atmosphere was absolutely electric, and we can hope for more of the same in the remaining two games. We had Naseem Shah before the break talking about his spell, and now we've been joined by JP Dumini to talk about South Africa and where they went wrong. JP, they started things off so well. They had a partnership of 98 at the top and then sort of lost their way somewhere. I mean, do you think perhaps they were short of runs? Yeah, I think the obvious one, if you look at the outcome, yes, 20 or 30 runs short. Matthew Breetzker spoke about that in the post-match presentation. But I think if we dissect it a little bit more, you have to give credit as well to the middle phase of the game, particularly for the Pakistan spinners. They really honed in on hitting the stumps well, bowling a good line in length. Then, particularly towards the back end of the batting innings for South Africa, the ball started to turn a little bit more. So asked different types of questions. But I think if you look at the top six on a whole, you got 3 debutants there, an opportunity to play in foreign conditions, an opportunity to expand your game, and I think that's the learnings that South Africa will take out of this. Yes, great to have Quinton de Kock back, in good form. Leandro Pretorius looks like he's played his 50th game already. Just you feel that he's somebody that's going to be around for a really, really long time. He reminds me a lot of Quinton de Kock coming onto the scene and just looked like they belong. And it's great to see players like that, of that quality coming through. But great lessons to be learnt. Opportunities for us now to look at this and see, in terms of our options, is there something different that we can look at against the spin? Because it's going to be very similar, isn't it? Even though we might see a different surface, but really about, are we needing to employ sweep shots more, using our feet more, reverse sweeps? These are the questions that are going to need to find some answers for come second ODI.
I'm sure Pakistan is also looking for a lot of answers because, you know, towards the end it got a bit difficult. But we'll come to that, Ramiz, just in terms of, you know, how they bowled and set up the match for themselves. Because at one point it looked like South Africa might, you know, well get 290, you know, 300 maybe even. But that middle phase was impressive from Pakistan. Very impressive, and the end was impressive as well. To limit South Africa to 263 was a grand job. I was expecting this pitch to crumble and be just a little bit more devastating for the batsmen, but I thought the pitch held up quite nicely, and Pakistan would have been a little surprised as well at the trueness of the pitch, and then they galloped and made a strong comeback in the later part of the innings. The spinners were on song. The catching was good, and overall they had a strategy and a plan, and then Shine Afridi and Naseem Shah did the job so well. They spin, but not off the straight in the first part of the game, but the second time around I thought the ball spun off the straight, and Robin Bosch, even though he steadied the ship for a little while, but getting out before the 50th over was just not good enough from South Africa on a surface like this, which didn't have a lot of demons. Right. Also, the role of Saim Ayub, the bowler. I mean, he's if you look at his career, it's only been recent when he's been sort of given that responsibility. But it seems, Ramiz, like he's relishing the challenge because he's making a difference. Yeah, it's not like as if he's asked to roll his arm over. Now it's become a match winner for you in a way. In the middle phase of the innings, there's a lot of sly bowling, there's a lot of foxing the opposition, you know, he's got a bit of control as well, and so he's challenging the established spinners, and he's a great plus for Pakistan because he bats so well. He bowls in the middle phase of the innings, he can bowl with the new ball also, he feels well, so he's become an all-important player, a three-dimensional player for Pakistan. Bowling wise, do you think South Africa could have done things a bit differently? I mean, is there any area where they could have worked on? Of course, we spoke about debutants and Pretorius, and a lot of the others did really well with the bat, but I'm just saying in terms of the bowling. Yep. Yeah, I think first off the bat, I thought Don Ferreira was really good. You know, he's not necessarily seen as a frontline spinner, and to be able to bowl in the power play and execute his skill as well as he did, I thought that was really good. Bjorn Fortuin, I thought also, based upon his skill, is really about hitting the stumps, and I thought the accuracy was really good. If I look at George Linder, he'll probably be a little bit disappointed in terms of his execution. I thought his plans were good, but on the surface such as this one, can he be consistent in hitting the stumps more often than not? And he probably leaked at a touch on the leg side, and that can happen from time to time when you're looking to bowl consistently straight. And from a seamer's perspective, yeah, they will probably go back and look at, is there an opportunity to maybe use the change-up a little bit more? You know, probably Lungi Ngidi was really effective towards the back end there, getting a few sticks. But I thought, you know, even in the end, you'd feel that Pakistan should have won it comfortably. And I think the benefit that they'll take out of it, or the confidence that they'll take out of it, is really that they took the game to the last over. And for a young squad such as this one to be able to fight till the end, I think shows a lot of character and what they are building in the change room. And that certainly bodes well for what the future holds for ODI cricket for South Africa. There's been a great rotation policy and giving opportunities to young players, particularly in these conditions, which I think will only bode us well going forward. There was definitely responsibility that they showed, you know, and a lot of character, considering the kind of inexperience that they've got. Mohammad Rizwan and Salman Ali Agha seem to love this format, the ODI format. They seem to really sort of bring out their A game, and we've seen that a lot in chases. You can talk about finishing the game, and that's another aspect, but just the fact that they've been contributing augurs well for Pakistan, doesn't it? Yeah, I mean, it was a difficult situation for Pakistan because the top order was removed, and so they needed a partnership, somebody who could play the situation and not be worried about the end result. They remain in the present moment. I thought they were complementing each other. They mash each other for skill. There's good rotation of strike, and there's purpose, and they both seem to play spin expertly, and that's the advantage that they have in the middle phase on a surface like this. But Pakistan making a heavy weather of it, it doesn't augur well, because every time we see a couple of them losing the plot at times, and the pressure is on the tail enders, as Naseem Shah was just alluding to. So I think once you're in, then you've got to finish the game. And I think that is where Rizwan would be just a touch disappointed. Is it a case of better shot selection, or how would you, you know, what would be the missing
part of this chase that Pakistan is sort of struggling in terms of really winning it convincingly. When the scores are over 300 and you're playing, you know, in a World Cup, how do you face that situation? Yeah, it's a tough situation because our sample size is not very encouraging. But having said that, I think it's important that once you're set, you've got to finish the game. So take it to the 48th over. Let's see what happens. And there's always advantage to be had if you've got a set batsman right till the end in a chasing situation especially. But somehow, you know, we lack that confidence at times. And it shows in the way the dugout was responding to a couple of wickets that fell at the fag end of the innings. They were in a mini huddle. They were questioning each other. They were saying, not again. What if we lose this? And so that's a very uneasy feeling to have in the dugout. All right, so lots of areas to work on for both these sides. But remember, tomorrow is an off day. It is off for all the players as well as everybody's working on the game. And then you've got the next game on the 6th of November. And this coverage, remember, it starts at 2:25 p.m. for this KFC Presents Vigotel Mobile ODI Series. All right, thank you so much, Ramiz, and thank you so much, JP. It's getting a bit chilly now. I think it's time to head home. Your jacket is hopefully keeping you warm. And I'm sure that all of you were super entertained while you were at here. Faisalabad crowd was absolutely amazing. So hope to see you guys once again for that second one-day international. Until then, it's goodbye from all of us.